Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we will discuss the remaining part of our chapter, which is associated with ethical principle and decision-making guidelines. Far, we have discussed 2 or 3 principles of ethical principles in decision-making. In this lecture, we will be discussing the remaining principles which are being which are actually given by different scholars. So let's start with our chapter. Now, starting with these principles, first of all, a universalism principle, a deontological approach, which is actually a duty-based approach. This principle was given by Immanuel Kant, which is considered one of the leading founder of the principles of universalism. And this universalism is also called as deontological ethics or non-consequentialist ethics, and holds that means justify the ends of an action, not the consequences. Like, it is actually different from utilitarianism, as utilitarianism suggests that you can think anything as ethical if the ends are good or results are good. In that case, your means doesn't matter. But in this case, they say that you have to see the means which are used for getting that end, and if that is correct, so you will consider that thing as ethical. And Kant's principle of categorical imperative places the moral authority for taking action on individual duty toward other individuals and humanity. Like, accounting to this way, they are actually suggesting that every individual has a duty over others, and they have to consider individuals and humanity, because their actions have impact on all those people. So they have given this categorical imperative principle. According to this categorical imperatives principle, it is of 2 types, or you can say it has 2 parts. The first part states this person should choose to act if and only if he or she would be willing to have every person on earth in that same situation act exactly that way. And the other the other part is, or the second part of this categorical imperative states that in an ethical dilemma, a person should act in a way that respects and treats all other involved as and as well as means to an end. So, according to this approach, moral authority is determined by the extent to which the intention of an act to treat all persons with respect includes the requirement that everyone would act this way in the same circumstances. लाइक अगर हम इसमें देखें जाए, ये यूनिवर्सलिज्म की बात हो रही है ना, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है। तो जब हम इसको ड्यूटी बेस्ड अप्रोच कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बता रहे हैं कि आप जिस सिचुएशन में भी हैं, आपकी एक ड्यूटी है टुवर्ड्स आपकी अदर दूसरे लोगों की, और एक ह्यूमैनिटी की आपके ऊपर ड्यूटी है। और वो ये कहते हैं कि एक चीज़ की क्या नतीजा या एक चीज़ का जो नताइज आते हैं वो इतने मैटर नहीं करते जितने उसके लिए आप रास्ता इख्तियार करते हो, जो सोर्सेज यूज़ करते हो। मतलब मीन्स का मतलब ये है कि जो आप सोर्सेज यूज़ करते हो, एंड्स का मतलब एंड रिजल्ट क्या है। कि अगर आप कहते हो कि जी वैसे एक चीज़ है कि जी ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन असल में ये अप्रोच इस चीज़ को अपोज करती है कि आपका मीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो। और अगर आप एथिकल डायलेमा की सिचुएशन में हो, या आप एथिकल जहाँ पर एथिकल वायलेशन का आपको खतरा हो सकता है कि होगा, तो एट दैट केस आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है। लाइक अगर वो ये कहते हैं कि इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इसमें वो कहते हैं कि आपका जो जितने भी लोग हैं, जिनके मॉरल मतलब उनको अगर मॉरल अथॉरिटी दी गई है और वो कोई एक्शन करते हैं, चाहे वो जिस पोजीशन में भी हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, चाहे वो फादर है, चाहे वो मदर है, चाहे वो जिस एस्पेक्ट में उनके पास अथॉरिटी है, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं और ह्यूमैनिटी है, उस आपके एक्शन से उनको इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपने जो है वो उस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें जो कैटेगोरिकल इंपैरेटिव है, इसके बीच में इसने 2 पार्ट्स बताए हैं कैटेगोरिकल इंपैरेटिव में। एक तो वो कहता है कि पहला पार्ट ये है कि वो ये कहता है
कि आप अगर कोई आपने एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना है या कोई भी सिचुएशन है तो आपने ऐसे ही एक्ट करना है जैसे पूरी दुनिया में या पूरी दुनिया में कोई और उस सिचुएशन में वैसे एक्ट करे, आपने भी उसी तरह एक्ट करने अगर आपको उस तरह की सिचुएशन होगी। देन इसमें आप दूसरी ये है कि आपने जब कोई जो है कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपने उसमें तमाम लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मीन्स में है, चाहे वो एंड रिजल्ट जिस में उन पर इम्पैक्ट हो रहा है, उन तमाम के रिस्क को, उन तमाम की सिचुएशन को, उन तमाम के मफादात को जहन में रख के जो है वो आपने एक्शन करना है। तो अनदर वे आपकी ड्यूटी है टुवर्ड ह्यूमैनिटी, टुवर्ड इंडिविजुअल्स, कि आपने उनको उनका जो है वो चाहे जिस एस्पेक्ट पे भी है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि उनका आपने ध्यान रखना है जब भी कोई आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। Now, when we talk about universalism or duty-based approach, there are many weaknesses associated with this approach. Some of the major weaknesses are listed below. First of all, principles are imprecise and lack practical utility. Like the principle which is being identified by this approach is not very concise or not very precisely identified, and secondly it practical utility, because there are certain decision in which case you have a very limited time and you need quick action or quick decisions. So in that case you cannot identify different aspect or identify ethical dilemma in every situation. So first weakness is that it's imprecise and it's lack practicability. Then hard to resolve conflict of interest, because when we talk about stakeholders, or when stakeholders are the people or are the groups which are impacted by your actions. So there are different stakeholders and there's different stakes are involved. So therefore there is a conflict of interest, because we have employees, you have customers, you have suppliers, you have your society. So obviously conflict of interest is there. So it's very hard to resolve conflict of interest. Thirdly, does not allow for prioritizing one's duties, because when you talk about prioritizing duties, you cannot think of many things like difficult to take absolute position when limited resources and time and conflicting values are of factors. So in that case you cannot prioritize different duties. Then another aspect is universalism and stakeholders analysis. So when we talk about stakeholder analysis, in this case, this principle identify individual whose needs and welfare are at risk with a given policy or decision. Secondly, it identifies the use or misuse of manipulation, force, coercion, or deceit that may be harmful to individuals. Then it identifies duties to individual affected by the decision, and it determines if the desired action or policy would be acceptable to individual if decision were implemented. So जब हम बात करते हैं ना यूनिवर्सलिज्म की, तो इसके बीच में मतलब ये बिल्कुल ऐसी 100% एक्यूरेट अप्रोच आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इसमें भी वीकनेसेस हैं। पहले अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इम्प्रिसाइज है, मतलब बिल्कुल एक्चुअली 100% जो है ना वो आपको गाइड नहीं करी कि आपको किस सिचुएशन में क्या काम करना है। सेकंड चीज वो इसमें इम्प्रैक्टिकल जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा होता है कि ऐसा डिसीजन लेना होता है जिसमें आपने बहुत क्विकली अपना जो है वो डिसीजन लेना। सो दैट केस फिर उस टाइम पे आप जो है वो हर टाइम पे आप जो है ना वो एथिकल डायलेमास को उसमें डिस्कस नहीं कर सकते या उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। सेकेंडली इसमें अगर हम बात करें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये बात करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब एक सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और हर एक का अपनी एक जो है वो बेनिफिट उससे हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए एक एम्प्लॉयर है, उसने पैसा लगाया हुआ है तो उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। एक जो आपका एम्प्लॉई है वो जो है उसको अपनी तनख्वाह से मतलब है। इसी तरह एक कस्टमर है, उसको अपनी जो प्रोडक्ट मिल रही है वो उसको मतलब है। तो हर बंदे का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होता है, तो इसमें आप हर बंदे के इंटरेस्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। सो
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक जैसा नहीं कर सकते, उसमें मसले मसाइल आपके पास आते हैं। इसके अलावा जब हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्योंकि ये अप्रोच कह रही है कि आपने हर सबको इक्वली ट्रीट करना है, तो आप उसके बीच में ये नहीं कह सकते कि किसकी ज्यादा ड्यूटी है किसकी कम ड्यूटी है। सो ये जो है ना, इसके बीच में ये चीज थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग है। फिर ये एक जो आपको बताता है कि जी यूनिवर्सलिज्म और स्टेक होल्डर एनालिसिस इशूज जो हैं, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी वेलफेयर और जो है वो अगर एट रिस्क है, तो उसको मतलब आपकी किसी भी पॉलिसी पे एट रिस्क है तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको उसका ख्याल रखना है। सेकंड है कि आपने कोई भी जो है ना वो अपने पावर की या किसी भी और रिसोर्सेज को मिसयूज नहीं करना, किसी को फोर्स नहीं करना किसी काम के ऊपर अगर वो विलिंगफुली काम नहीं करना चाहते, अगर आप जो है तो किसी को धोखाधड़ी नहीं करनी, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसके अलावा ये प्रिंसिपल जो है ना, या जो है आपको बताता है कि हर बंदे की एक दुनिया में अगर वो आया है तो उसकी ड्यूटी है, और उसकी ड्यूटी और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो उससे दूसरे उस डिसीजन से इम्पैक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर मतलब अगर कोई पॉलिसी बनती है तो ये बताता है कि अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वो उस वक्त एक्सेप्टेबल होगी जब वो डिसीजन जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो सबको एक्सेप्टेबल हो, मतलब वो सब इस बात पे राजी हो कि ये प्रिंसिपल जो है ना वो इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए वो ड्यूटीज फॉर मतलब बता रहे हैं कि आपकी बीइंग ह्यूमन या बीइंग एन इंडिविजुअल इन द और इन अ सोसाइटी, आपकी क्या ड्यूटीज हैं और आप किस तरीके से जो है ना वो अपने प्रिंसिपल अपने जो भी काम करते हो उससे दूसरों का ध्यान आपने किस तरीके से रखना है। Now, another ethical principle is your rights. It may be moral or legal. It is also called as an entitlement-based approach. When we talk about rights, so rights are based on several sources of authority. Like when we talk about legal rights, so legal rights are entitlement that are limited to a particular legal system. For example, if we look into the scenario of Pakistan, so we can see that Pakistan Constitution has provided certain legal rights to its citizen, like the right to life, liberty, and pursuit of happiness, and the right to freedom of speech. So these are the rights which is being provided by the legal system of Pakistan. On the other hand, when we talk about moral and human rights, these are universal and they are based on norms of the society, like the right not to be enslaved and the right to work or respect are being a woman. You are given right to be entertained firstly, or any other things. So these are the rights which are being given by the society, societal norms. But when we talk about rights, so moral and legal rights are linked to individuals and in some cases group, but not societies, as in the case of utilitarianism principles, which are actually associated with societies. But when we talk about this rights, so there are certain limitations associated of this principle. First of all, it can be used to disguise and manipulate selfish, unjust political interest and claims, as we are talking about legal rights which are being given by the legal system of the country. So this legal system is designed by the people or or politicians which are at the lower or upper houses. So in certain cases when they are not very honest to the people, and if they want to manipulate rights of others, so they will definitely design certain kinds of certain kinds of laws or system which can manipulate and serve a political interest and other aspects of this that political interest. Then another thing is protection of right can be at the expense of other. Secondly, it might be possible that certain rights are given to certain individual or certain individual which are related to certain communities, but that are given on the basis of violating the rights of another society or people of individuals of other society. So that can create problem. The third thing is that limits of right can come into a question, because people have number of views regarding certain rights and certain things. So in that case, it is actually questionable and it can create problem.
But when we come into rights and stakeholder analysis, the major contribution given by this rights approach is it identify individual and their rights, and that can be violated by a particular action. Secondly, it determined the legal and moral basis of these individual rights and determine the moral justification from utilitarian principle if individual rights are violated. So अगर हम इसको देखें तो ये अप्रोच है, ये असल में हकूक की बात कर रहा है कि आपके हकूक के बेसिस के ऊपर आप जो है ना वो करते हो। तो इसमें दो तरह के हकूक की बात की गई है। एक जो है वो आपकी वो हक है जो आपको कानूनी तौर पे मिलता है। लाइक अगर हम देखें तो पाकिस्तान में का जो एक वो है कानून है, उसने जो है वो लोगों को मुख्तलिफ तरह के हक दिए हुए हैं। लाइक आप एक मुल्क में अगर रहते हैं तो वहाँ पर आपको जो है ना वो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी आप कर सकते हैं वहाँ पे आप जो है अपनी मर्जी का जो है वो इजहार कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ किस चीज़ के खिलाफ हो तो आप हैं, अगर आपका डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे आपको जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। प्लस आप वहाँ पे अपनी कहीं भी घर ले सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपका हकूक है जो आपको आपके कानून ने दिया हुआ है। एज अगर हम उसको बात करें मॉरल राइट्स की बात करें तो मॉरल राइट्स जो होते हैं वो राइट्स होते हैं जो आपको किसी भी सोसाइटी के जो एक वो वैल्यूज होती हैं या सिस्टम होता है, एथिकल सिस्टम होता है, उसकी बेसिस पर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राइट्स की तो ये राइट्स जो हैं ये एक्चुअली एसोसिएटेड है इंडिविजुअल्स के साथ, या कुछ इंडिविजुअल जो मुख्तलिफ एरियाज में या किसी भी सोसाइटीज़ को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये होल सोसाइटी के राइट्स वगैरह को नहीं बता रहे, जो जिस तरह हम यूटिलिटेरियन में हमने देखा था। देन अगर हम बात करें राइट्स की तो इसमें अगर आप इस प्रिंसिपल की सर्टन महदूद है ये कुछ, क्योंकि मतलब अगर आप लीगल राइट्स की बात करते हैं तो कभी जब क्योंकि ये जो आपका कानून है ये पॉलिटिशियंस बनाते हैं, तो पॉलिटिशियंस जो है ना वो अपनी मर्जी से अगर किसी भी तबके को या अपना कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं तो फिर वो उसमें उस कानून में इस किस्म के अमेंडमेंट्स लाएंगे तो उसमें वो चीज़ें आपको जो है ना वो अपना जो मकसद है वो हासिल करना चाहेंगे। इसके अलावा कभी कभार आप कुछ लोगों को उनके राइट्स देते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा राइट्स दे देते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि जो अब ये राइट आपने एक पार्टी को दिया है तो वो दूसरे की पार्टी की जो राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो इस चीज में भी प्रॉब्लम आती है। फिर इसके अलावा अगर कोई आपसे कहता है कि हमें इतनी ज्यादा इख्तियार देना चाहिए, तो अख्तियारात की तो कोई हद नहीं है, या आप इसको कह नहीं सकते कि कोई कोई हद नहीं है जैसे, तो उस चीज में फिर आप जो है ना वो एक लिमिटेशन जो है ना वो प्रॉपर्ली इसमें आइडेंटिफाई नहीं हुई। फिर आप कहते हैं कि अगर इस राइट्स प्रिंसिपल को देखें तो इसने कैसे स्टेक होल्डर्स एनालिसिस को इम्पैक्ट किया है या किस तरीके से उसमें हेल्प की है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका जो राइट्स के प्रिंसिपल हैं इसमें वो कहता है कि ये आपको हर इंसान के ये जो इंडिविजुअल होते हैं उनके हकूक के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि किस जगह पर किस किस वजह से आपकी जो है ना वो आपकी कोई वायलेशन होती है या कुछ काम ऐसा होता है जो आपके हकूक में जो है ना वो वायलेट हो रहे हैं, या मतलब आपके जो भी हैं वो हकूक पूरे नहीं हो रहे। इसके अलावा वो बताते हैं कि ये जो आपके कानून बने हुए हैं जिससे आपको हकूक मिले हुए हैं, इन हकूक की बेसिस है क्यों आपको ये तमाम हकूक जो है वो मिले हुए हैं। और फिर ये बताता है कि आपका मॉरल जस्टिफिकेशन देता है ना, मतलब इखलाकी जस्टिफिकेशन देता है कि ये जो प्रिंसिपल बने हुए हैं इनको वायलेट नहीं करना चाहिए, अगर मतलब अगर वायलेट करेंगे तो क्या क्या मसले मसाइल जो है वो हो सकते हैं। Now, another principle is actually called as justice principle, like justice in procedures, compensation, retribution. The principles of justice deals with fairness and equality. Like they have the moral authority that decide what is right and wrong, concern the fair distribution of opportunity as well as hardships to all. The principle of justice also pertains to punishment of wrong done to the undeserving. John Rawls, a contemporary philosopher, offers two principles or recognized principle of fairness that represent the principle of justice. First of all, equal rights compatible with similar liberties for other. That means that each person has an equal right to most extensive basic liberty that are compatible with similar liberties for others. Because it actually states that all individuals should be treated equally. Like if you have given liberties to one society, so it should be given to all the other societies which are living at a same place. Then second one is social and economic inequality arrangement. These
like actually these arrangements are both reasonably expected to be everyone's advantage and attached to position and office open to all. So the this second principle states that justice is served when all persons have equal opportunities and advantages through their position office to society's opportunities and burdens. Then four type of justice actually include compensation, retributive, that is actually related to punishment for wrong, distributed, that is everyone has equal share, or procedural, like free and fair justice system. So first of all, when we talk about compensatory compensatory justice, it concerns compensating someone for a past harm or injustice. For example, a formative action program like if, just like for example, for compensation for decades of injustice that minority have suffered. Like for example, if you look into the Americans, so obviously they are giving certain privileges or compensation to their black people due to harm or due to many other injustices which have been done in the previous past. Then second one is retributive justice. It actually means serving punishment to someone who has inflicted harm or harm on others. Like if you are providing punishment, or if you're giving punishment, so this punishment should be given on the basis that the punishment would fit with the crime. Said if someone is not actually committed a crime which is actually prone to high punishment, so it should not be given to him. So the punishment would be given according to the level of crime the person has committed. Then the other one is distributive justice. So distributive justice refers to the fairness distribution of benefits and burdens. Like it's very important that in a society, when you are distributing different type of asset, resources, or any other thing, so it would be given to everyone, and everyone should have an equal share of that thing. Then procedural justice, that means in the country there should be a free and fair justice system, that is justice for all. Like majority of times in every society you can see that it is not 100% implied, but it should be the actually practice, or it should be the efforts that this type of justice should be served in a society, because it can be regarded as based on ethical principle or ethical scenarios. Like अगर हम justice की बात करते हैं तो procedure, compensation और retribution. Like अगर आप जिसमें procedures की बात करते हैं, तो procedures का मतलब कि जो भी तरीक़ाकार हो रहे होते हैं उसमें इंसाफ को मद्देनजर रखना चाहिए. अगर आप किसी को compensation दे रहे हैं, compensation actually जब हम बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई पिछले टाइम पे या कभी कोई किसी भी सोसाइटी को या किसी भी लोगों को, कुछ किस तरह के भी लोगों को आपकी नाइंसाफी कहीं पे हुई है, तो उसको आपने जो है ना वो उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ मराद वगैरह देनी है. देन रिट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप कोई सजा दे रहे हैं, तो ये ना हो कि आप एक बंदे का गुनाह या एक बंदे का जो वायलेशन की है वो इतनी ज्यादा ना, और आप उसको बहुत ज्यादा सख्त सजा दे रहे हैं. तो जो भी आप क्राइम है उसके मुताबिक उसकी सजा जो है ना वो फिट होनी चाहिए. सो यही आपका जस्टिस, ये प्रिंसिपल है जस्टिस का, कि जो जस्टिस का प्रिंसिपल है वो फेयरनेस और इक्वालिटी, इसका मतलब ये है कि इंसाफ पसंदी को और बराबरी को देखता है. इसमें दो तरह के चीज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हर बंदे को एक जो राइट्स जो है ना वो इस तरह के देने हैं जो दूसरे लोग जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं. और दूसरी बात ये कि जो भी आपको माशरे में और इकोनॉमिक जो मराहत वगैरह मिल रही हैं, उनको जो है ना वो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हर बंदे को इस तरह की मराहत जो है वो देनी है. चार तरह की जस्टिस की बात यहाँ पर हुई हुई है. एक कंपेंसेटरी, जो भी मैंने बताया आपको कि अगर किसी भी एरिया में या किसी भी जगह पर किसी सोसाइटी के लोगों को पहले जो है वो कोई नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरह कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई हुई है, तो उस केस में फिर उनको आप जो है ना वो कंपेंसेशन देंगे. प्लस रिट्रीब्यूशन और पनिशमेंट फॉर रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी को सजा दे रहे हैं, तो सजा जो है उसके जो भी उसने गुनाह किया उसके मुताबिक होनी चाहिए, ना कि काम गुनाह उसका बहुत छोटा सा और आप उसको बहुत ज्यादा सजा दें. ये चीज देखना है. देन डिस्ट्रीब्यूशन,
इसका मतलब है कि अगर एक मुल्क में आप ज़राए वगैरह या रिसोर्सेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हर बंदे को इक्वल जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे आप हम नौकरियों की बात करते हैं, जैसे हम और किसी चीज़ की बात करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों में तालीम की बात करते हैं तो हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उसके बीच में उसको जो है वो उसका हिस्सा मिले। इसके अलावा प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब यह है कि एक मुल्क में या किसी भी जगह पर जो उनका इंसाफ का सिस्टम है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मतलब उसके बीच में कोई पॉलिटिकल या कोई सोशल या कोई इकोनॉमिक जो है ना वो दबाव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें होंगी ना तो फिर हम कहेंगे कि ये एथिकल प्रिंसिपल के मुताबिक है। When we talk about justice principle, there are many problems associated with this principle, like outside the judicial system. Like when there is judicial system is not there, and it is not properly enforced. So in that case, who decide that who is right and who is wrong? Because there are conflicting claims. People come with you with different claims. So at that time, it becomes a problem that you will not be able to decide that which person is wrong and which person is right. Then secondly, when if there is no proper judicial system or not proper authority, so nobody who has the moral authority to punish, it is also not identified in this. And can opportunities and burden be fairly distributed? So how you can decide that opportunities and burdens are fairly distributed? So that create certain conflicts, and in that case we can say that this principle has certain flaws. Then another problem is that justice, rights and powers are really intervened. They are actually linked to each other. So you cannot separate all these things. You cannot separate justice with rights or rights with power. So because all these things are intervened with each other, compactly intervened in each other. And when you are transforming justice, it's very important that you should be the person should be aware of their right and power, and they should have attained a certain legitimate power to obtain their rights. So जब हम justice system की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके justice जो है principle है, इसके बीच में कुछ flaws हैं, क्योंकि अगर एक country में अगर एक proper judicial system है तब तो ये तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर ये प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम कहीं पे अप्लाई नहीं है या वहां पर नहीं प्रॉपरली मौजूद, तो उस टाइम पे कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही है, कौन सी चीज सही है और कौन कौन गलत है? और किसको आप जो है वो अथॉरिटी देंगे कि ये बंद उसको जो है ना सजा दी जाएगी? और आपको ये भी नहीं समझ आ रही होती कि आपने अपॉर्चुनिटीज और जो भी अगर कोई भी काम है या कोई भी बर्डन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं हुए। इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि देखिए जस्टिस मतलब इंसाफ है और हकूक है और ताकत, ये तमाम चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। इनको हम सेपरेट अलग-अलग से इनकी बात हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले या ट्रांसफॉर्म करें हम जस्टिस को, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारे पास कितने पावर है, हमारे पास कितना ताकत है। और सेकेंडली हमने अगर आपने कोई अपने राइट्स हासिल करने हैं तो हमारे पास इतना पावर हमें हासिल होना चाहिए कि हम अपने राइट्स को जो है वो हासिल कर सकें। Now, in case of justice, stakeholder analysis issues are that if particular action is chosen, how equally will cost and benefit will be distributed to stakeholders? How clear and fair are the procedure for distributing the cost and benefit of the decisions? And how can those who are unfairly affected by the action be compensated? Like इससे प्रिंसिपल में अगर हम स्टेक होल्डर एनालिसिस को देखें तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई खास आपने काम किया या कोई खास एक्शन आपने सेलेक्ट किया है तो उसकी जो है वो खर्चा क्या होगा और उसके फायदे क्या होंगे, और वो ये खर्चे और फायदे किस तरीके से आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और कितना जो है ना आपका जो भी तरीकाकार यूज हुआ है कितना क्लियर है और कितना जो है ना वो इंसाफ पसंदी के ऊपर है, और कहाँ से और जो ये आपने फैसला किया इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि आप ये भी देखेंगे कि अगर कोई एक काम हो जाता है और उससे कोई नुकसान होता है तो उसमें उस केस में किस तरीके से लोगों को कंपेंसेट किया जाएगा, मतलब स्टेक होल्डर्स को कंपेंसेट किया जाएगा।
Now we will talk about different types of management styles. Like first of all, immoral moral management. It means that intentionally going against ethical principles of justice, of fair and equitable treatment of other stakeholders. Then amoral management, which happens when others are treated negligibly without concern for the consequences of action or policies. And there one is moral management, in which places values on equitable, fair and just concerns of others आर इन्वॉल्व. सो सबसे पहले अगर इमोरल मॉरल मैनेजमेंट में देखते हैं तो इसके बीच में जानबूझ के ये कोशिश की जाती है कि आपने जो है आप कोई इंसाफ पसंदी को ध्यान में ना रखा जाए, किसी के साथ इंसाफ ना किया जाए और हर बंदे के साथ जो है ना वो मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए. तो इमोरल मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, जानबूझ के लोगों के साथ नाइंसाफी करते हो और लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हो या इक्विटेबल ट्रीट नहीं करते. और एमोरल मैनेजमेंट में जो है ना वो आप जो है वो मतलब ये वायलेट तो नहीं करे होते, जानबूझ के तो नहीं करे होते, लेकिन आपसे रह जाते हैं, निग्लिजेंस हो जाती है. मतलब आप जो है ना वो आप जो है वो निग्लिजेंस के तौर पे या बेहतियाती के तौर पे या कोई ऐसे है जिसमें आप गलती से आप जो है ना वो लोगों को जो है ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता है और ऐसी पॉलिसीज बनती है जिसकी वजह से कुछ लोग जो है ना वो उससे डैमेज होते हैं. और मॉरल मैनेजमेंट ये है कि इसके बीच में हर तरह का इंसाफ पसंदी से आप हर बंदे के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करते हो और सब बंदों को इन्वॉल्व करते हो जो भी आप काम करते हो और हर बंदे को जो है ना वो उसका इक्वल राइट जो है वो प्रोवाइड करते हो. मतलब इसमें जस्टिस प्रिंसिपल्स यूज हो. Now we will discuss this last principle, which is individual ethical decision, and it is also called as ethical virtual perspective or character-based ethics. Stanley Krolick developed a survey that interprets individual primary and secondary ethical decision-making style, and it includes individualism, altruism, pragmatism, and idealism. Like according to this, moral authority is based on individual character virtue, such as truthfulness, integrity, honesty. An act, policy, strategy is moral if it reflects these kinds of virtues. So according to this survey which is being developed by Stanley Krolick, individualism means self-interest is first. Like you think that you have to serve your own interest, and after that everything comes after that. First of all you have to serve yourself, and then after that everyone is there. Second one is altruism, that actually you were acting in the best interest of others. Like this is a situation in which you want to serve humanity, you want to serve for the people, like for your kids, for your others, for your society. So that is called as altruism. And another thing is pragmatism. Like this is decision based on facts and figure. Like when you are making decision, you have to see that what are the real facts, and by seeing the facts and figure, you will be taking decision. Then last one is your idealism, that is decision based on pure ethics. Like you have to consider all the moral and ethical standards on this, and you have to make decision. So if we look into the ethical, stakeholder analysis in this case, first of all, the first thing is that this principle suggests that what are the character virtues of the individual stakeholders, the policy, the procedure or strategy in question. If particular action, policy, strategy is chosen, to what extent will these virtues be evident or missing? While seeking a mutually desirable outcome in a conflicting situation, how can conflicting character values and characters that are embedded or reflected in the decision, policy or strategy be avoided or negotiated? So इसमें अगर आप देखें तो ये स्टैनली क्रोकलिक है, इन्होंने जो है वो एक सर्वे किया था और ये देखने के लिए कि लोग डिसीजन कैसे करते हैं. मतलब जब आप डिसीजन करते हैं तो उसके बीच में क्या चीज़ें पहले देखते हैं. प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब है फर्स्ट थिंग क्या देखते हैं आप और सेकंड थिंग क्या देखते हैं. अगर आप एथिकल डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स में आप देखें तो सबसे पहले जो है ना वो इंडिविजुअलिज्म है. इसमें ये देखते हैं, इसमें ये क्या मतलब कुछ ये स्टाइल होते हैं जो लोग ये देखते हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो, पहले अपने आप को सर्व करेंगे, उसके बाद किसी और को देखेंगे. लेकिन अगर हम अल्ट्रुइज्म को देखें तो आप चाहते हो कि लोगों का फायदा हो, जितने ज्यादा लोगों का फायदा दे सकते हो
आप फायदा दो। फिर प्रेगमेटिज्म का जो अप्रोच है उसमें ये होता है कि वो ये कहते हैं कि हमारा जो भी डिसीजन हो वो फैक्ट्स एंड फिगर पे हो, मतलब जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो बातें हैं, जो आपको डेटा नजर आ रहा है, उसके बेस के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि जो सही है, जो गलत है, कहाँ क्या क्या चीज हो सकती है और क्या क्या चीज नहीं हो सकती, उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करें। और आइडियलिज्म अप्रोच जो है उसमें यह है कि आपने हर एक का ध्यान रखना है, हर एक चीज के, हर एक स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है, हर चीज को ध्यान में रख के आपने ऐसी करनी है जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को आपने प्योरली सेटिस्फाई करना है। तो जब स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात करते हैं, सो जो स्टेक होल्डर एनालिसिस इशू इसके बीच में आते हैं कि वो हम कहते हैं कि ये सबसे पहले ये आपको ये बताता है कि एक स्टेक होल्डर की क्या बुनियादी जो है ना उसकी खसूसियत होनी चाहिए, और आप प्रोसीजर और स्ट्रैटेजी जो बनती है ना उसमें उसकी क्या रोल होना चाहिए। और फिर अगर कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो सेलेक्ट हुई है, उसमें किस तरह पता चलतेगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिसिंग हैं और कौन कौन चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा जब आप कोई ऐसा मतलब डिज़ायरेबल आउटकम चाहते हैं या ऐसी चीज़ चाहते हैं जिसमें सबका फ़ायदा हो, तो उसके बीच में जो इंटरनली जो वर्चूज़ या वो जो भी बातें ध्यान में रखी गई हैं वो कौन सी हैं और किस तरीके से उस डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और कौन सी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। सो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इस इंडिविजुअल एथिकल डिसीजन मेकिंग का जो प्रिंसिपल है उसमें आपको नज़र आएंगे।